Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So let's get started with the job for today, which is to teach you a question based on accounting for not-for-profit organization. तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए. So the question today is a little different from everything that we have covered up in the past tense, well, in the past number of lectures for this particular chapter. Reason, well, आप पीछे देख सकते हो, that normally एक receipt and payment account से we create a income and expenditure account. Today also the solution is the same. We have to create an income and expenditure account and a balance sheet, but the question is very different, and it is very important कि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन में अलग क्या है. ओके, देखते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं. फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, मतलब यहीं पे वो वर्ड आ गया, ट्रायल बैलेंस. व्हाट इज एवरीबडी अ ट्रायल बैलेंस? यस, मेनी ऑफ यू नो इट, but for a few of you, trial balance is a list of debit and credit balances. Okay, in accountancy there are only two possibilities. Either an account has a debit balance, normally assets and expenses come on the debit side. I repeat myself, asset and expenses, debit side, example building, furniture, investments, expenses, salary, stationery, general expenses. And on the credit side, income and liabilities, income and liabilities. Okay, so this is, I repeat, absolutely not receipts and payment. तो वो जो thinking थी ना, क्या receipt है तो income में जाएगा और payment है तो expense में जाएगा, वो आज के लिए use मत करना. Debit है, debit में लिखेंगे either asset और expense. क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे या तो लाइबिलिटी या तो इनकम. ओके, एंड बिकॉज दिस इज अ ट्रायल बैलेंस एंड द ट्रायल बैलेंस इज ऑन द लास्ट डे, प्लीज वो ऊपर पढ़ लेना. दिस इज इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर अ स्कूल. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 17. So 16-17 becomes your current year. Next year is 17-18 and the previous year was 15-16. तो ये आपके फॉर्मेट में, आपके सोल्यूशन में कहाँ ना कहाँ पे तो लिख लेना. ओके, ये पूरा ट्रायल बैलेंस एक बार पढ़ लेते हैं. बट इन सच अ क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस शीट की ज़रूरत आपको नहीं है.
Therefore, चलिए पहले बता देता हूँ. Let me clarify a few things. Behind is the income and expenditure account, and in this particular question, it's not always, but in this particular question, RTNL, PTNL, opening stock, closing stock, there is nothing. So it's fine अगर आपने कुछ बनाया नहीं है तो. And secondly, on my next page is the closing balance sheet. Okay, so हमको अभी शुरुआत करना है. वो फर्नीचर जी पहले ही आ चुके हैं, डोंट वरी, उनका टाइम आएगा. सो 2 थिंग्स रेडी रखना फॉर्मेट के हिसाब से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट नेसेसरी. ऐसा क्यों है? बिकॉज नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाते हो कैपिटल फंड के लिए. इन दिस क्वेश्चन एक्चुअली कैपिटल फंड है ही नहीं. तो क्या है? अगर आप मेरे पीछे ध्यान दो, there is an item called as general fund. So basically it will act like a capital fund, but then the purpose ke I will prepare an opening balance sheet and then I will find out capital fund. In this question, general fund, I don't have to do it because it's already available. Okay, so accordingly only format is required. In the format no formulas are to be written. Right now reading, what am I reading on the debit side? Maybe asset, maybe expense. बिल्डिंग, फर्नीचर जो पहले से ही वहाँ पे प्रेजेंट है, लाइब्रेरी बुक्स, इन्वेस्टमेंट एट 12%. मतलब आपको उसका क्या करना है? आपको उसका एक हिडन एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना है. नाउ व्हाट हिडन एडजस्टमेंट? वेल, 12% मीन्स इंटरेस्ट फैक्टर. तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 12% के हिसाब से. डोंट वरी, उसका वर्किंग रेडी है. वो वर्किंग आप जैसे ही मैं आपको बता दूँ, डेफिनेटली कॉपी नोट डाउन कर लेना. सैलरीज एंड एक्सपेंस, स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस ऑब्वियसली इज एन एक्सपेंस, एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस. कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्लीज नोट दिस इज नॉट ओपनिंग बैलेंसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये है 31 मार्च 17 लास्ट डे का ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस नॉर्मली लास्ट डे को ही बनता है. तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग यहाँ पे कुछ नहीं है. एडमिशन फीस इनकम है. ट्यूशन फीस रिसीव, बिकॉज दिस इज अ स्कूल, देन ऑटोमेटिकली यहाँ पे उन्होंने सब्सक्रिप्शन का वर्ड यूज नहीं किया, तो दैट्स फाइन. आप लोग ट्यूशन फीस जैसा है वैसे लिख लेना. क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज, नॉर्मल क्रेडिटर्स. नॉर्मली इन दिस चैप्टर यू डोंट गेट द वर्ड क्रेडिटर्स, बट देन अगेन इफ इट इज अ स्कूल, पेपर, स्टेशनरी, कोई ना कोई तो सप्लाई कर ही रहा है ना. हाँ, so they are nothing but creditors for supply. Liability, rent for the school hall. Schools normally have a hall, a ground, okay, जो स्कूल के टाइम पे असेंबली के लिए यूज किया जाता है, okay, और ड्रामेटिक्स और मे बी अ सर्टन परफॉर्मेंस, बट अदरवाइज वीकेंड पे सैटरडे संडे खाली रहता है. सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स, किसी के एंगेजमेंट के लिए, किसी के बर्थडे पार्टी के लिए, किसी के मैरिज के लिए, it is given on rent, and भाड़ा आता है, रेंट आता है. so that's an income. miscellaneous receipt, income. स्कूल में आप, okay, और colleges, you students do write a lot. मतलब whenever everything was not in a digital format, everything, whether it is the unit test, the semester, maybe 5 subjects, 6 subjects, you wrote. Those papers are collected by the school, but eventually they are sold. क्योंकि how much papers will a school, answer sheet will a school collect, तो बेचने के बाद में उन लोगों को थोड़ा पैसा मिल जाता है, तो वो एक इनकम हो जाता है. मिसलेनियस रिसिप्ट का एक एग्जाम्पल. लेगेसी नॉर्मली इज एडेड टू कैपिटल फंड, बट हियर दे से इट इज जनरल, सो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस लेगेसी. डोनेशन भी अगर जनरल रहे तो आपको इनकम ट्रीट करना है, ये लेगेसी भी इनकम ट्रीट करना है. जनरल फंड इन दिस क्वेश्चन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैपिटल फंड, तो जनरल फंड हम लोग लिख लेंगे कैपिटल फंड के जगह पे. डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स, इंपॉर्टेंट. दिस डोनेशन इज नॉट अ जनरल डोनेशन, it has been given by somebody who may be a book lover and he wants or she wants that students inculcate the habit of reading books. तो उन्होंने जब डोनेशन दिया, how much, 60 to 500 स्पेसिफिकली कहा,
इससे बुक्स ही खरीदना. सो दिस डोनेशन मनी यू हैव टू कीप असाइड and you have to use it only for library books. So it will be called as library books fund and it will go on the liability side. Sale of old furniture. There is a very special adjustment connected to furniture which I will solve during the lecture. Obviously the selling price is 20,000. Additional information, point number 1, tuition fees yet to be received. This wordings yet to be received, you can call it as receivable. Salaries yet to be paid, you can call it as payable. So tuition fees में one line, no formula required. Salary में one line, no formula required. No RTNL, no PTNL, which is good. Time थोड़ा बच जाएगा हमारा. Furniture costing very important. 40,000 was purchased on October 1, 2016. Please note, what is October 1, 2016? It is the center of the year. इस तरफ और उस तरफ 6 months होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. दे आर सेइंग ये जो फर्नीचर है, जो एक नया फर्नीचर है, न्यू फर्नीचर था 40,000 का और आपने इसको खरीदा 1 अक्टूबर, तो इसका लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका लाइफ कितने टाइम के लिए था? 6 months. एनी ओल्ड फर्नीचर विल हैव अ लाइफ ऑफ 12 months, मतलब फुल ईयर, बट दिस पॉइंट वाला स्पेसिफिक फर्नीचर लाइफ इज फॉर 6 months. लाइफ पे क्या डिपेंड करता है? उसका डेप्रीसिएशन. ओके, जितने टाइम के लिए आपके पास वो फर्नीचर था, यू विल यूज इट फॉर दैट, इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट नंबर ऑफ मंथ्स एंड अकॉर्डिंगली द डेप्रीसिएशन विल बी कैलकुलेटेड. सो कीप दिस फर्नीचर मुद्दा in your mind. Point number 4, the book value of the furniture sold. Point number 3 has furniture purchased. Point number 4 has furniture sold. Was 50,000 on April 1, 2016. ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. This is the first day and the new furniture is purchased on 1st October. तो you have to first understand this कि पहले क्या हुआ. वो कहते हैं ना, मुर्गी आया कि अंडा आया. टाइमलाइन क्या है? तो यहाँ पे टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन ऑफ व्हाट? प्लीज नोट कि पहले फर्नीचर परचेज किया कि पहले फर्नीचर सेल किया. डेट देख लो. द पॉइंट नंबर 4 सेज दैट द सेल, दैट इज व्हाट वी विल अज्यूम, इज ऑन 1st April. फर्स्ट डे, ये जस्ट मेरे बाजू में है, आपने फर्नीचर बेच दिया, तो पहले हम लोग सेल करेंगे. उसके कुछ मुद्दे याद रखना. अबाउ दे हैव गिवन सेलिंग प्राइस 20,000. राइट नाउ दे हैव गिवन व्हाट? द कॉस्ट प्राइस, द बुक वैल्यू 50,000. इनफैक्ट जस्ट मेरे पीछे वो वापस से मेंशन किया गया है, क्या? वॉज सोल्ड फॉर 20,000. इट्स द सेम थिंग जो ऊपर दिया. 50,000 का चीज 20 में बेचोगे तो नुकसान तो होगा ही, ऑब्वियसली. हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई इज पहले सेल हैंडल करना है, बाद में परचेज हैंडल करना है. ओके, इनफैक्ट परचेज हैंडल करने की जरूरत नहीं है. आई विल एक्सप्लेन इन सम टाइम. एंड लास्ट पॉइंट, डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज्ड at 10% on furniture, a very important point in this question. 15% on library books, and again मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा, and 5% on building. Library books depreciation, building depreciation and furniture depreciation. In the entire sum, मुझे ये उम्मीद है कि आपका ध्यान तो रहेगा ही, but your attention is a little bit more when it comes to the item of furniture. What do we do? There is no opening balance sheet, so don't worry about an opening balance sheet. Directly ऊपर का ट्रायल बैलेंस है जो मेरे सिर के ऊपर है. ओके, उसमें क्या है? बिल्डिंग. चलो भाई, बिल्डिंग तो एसेट है. सो वी स्टार्ट विथ द ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस शीट, सॉरी, ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू आइदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और टू द बैलेंस शीट. ओके, क्लोजिंग बैलेंस शीट. तो चलिए, we'll get started. So here goes. The first item, building 6,25,000, balance sheet writing 6,25,000. Leave a line क्योंकि there is a depreciation. Furniture at the beginning was 1 lakh. Here goes.
1 lakh. If I did not mention this particular question, in depending upon the version of the textbook जो आपके पास है ना, टेक्स्ट के में जो लिखावट है, that is the printing, उसमें थोड़ी गलतियां हैं. तो there has been changes and modifications made in the original textbook amounts. I'll just point it out to you. फर्नीचर का वैल्यू अलग दिया था टेक्स्ट बुक के अंदर, कैश एट बैंक का वैल्यू अलग दिया था टेक्स्ट बुक के अंदर, फिर जनरल फंड का वैल्यू अलग दिया था टेक्स्ट बुक के अंदर, और पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 के अंदर हल्का मॉडिफिकेशन है. सो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू ऑल द मिस्टेक्स, ऑल आई एम सेइंग इज दिस क्वेश्चन इज करेक्ट. द सॉल्यूशन दैट वी हैव डन is as per this particular question. Okay, so you accordingly please do remember the title of this lecture or every lecture will always have the question number and the page number जहाँ से ये solve किया गया है. Continuing, building लिख लिया, furniture लिख लिया, library books वो भी लिख लेते हैं. These are all assets. How much? 1,50,000. Next, investments at 12%. Do keep this in mind that there is an hidden adjustment based on this. I will do it at the end of the question. Next comes salaries. It's an expense, तो expenditure side पे लिखेंगे 5 lakh, leave one line. Stationery, simple stationery, there is no opening stock, no closing stock. 40,000. General expenses and 18,000, उसी के नीचे sports expenses 15,000. So together post कर लेता हूँ एक एक करके. General expenses 18 and sports expenses 15,000. Cash in hand, cash at bank. Cash in bank, cash in hand were the next items. Those are assets. So just above. पहले bank है जो in some textbook the amount is not correct, and cash in hand. These were the debit items. तो हमने debit में लिखा. Okay, अभी credit items है. In that the first one is admission fees, income 12,500. On the income side, today we don't have any formula as such. 12,500. Tuition fees received, एक adjustment है क्योंकि not all students will pay the fees, school fees on time. कभी कभी कुछ लोग डिले करेंगे, no problem, वो थोड़ी देरी के बाद देंगे, तो वो receivable होता है. Receivable. Creditors for supplies, any creditors for supplies होता है, कभी कभी creditors for services होता है. Okay, some creditors provide goods, material, some creditors provide services. Okay, दोनों को आपको पैसे देने हैं. Next, rent for the school hall, income है. Every weekend, Saturday, Sunday, school hall में कुछ ना कुछ function रहेगा. So the school or the college receives money. Miscellaneous receipt, income है. 30,000. Then comes legacies. Because the word general is given, we consider it to be an income. 3,50,000. General fund in this question is written in place of capital fund. तो right above, इनफैक्ट कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसका अमाउंट अलग है, हमने इसको 10 lakhs लिया है. डोनेशन बट नॉट नॉर्मल डोनेशन, स्पेसिफिकली फॉर लाइब्रेरी बुक्स. तो ये पैसा जो है आपको, यू हैव टू कीप इट असाइड, ओनली यूज इट फॉर लाइब्रेरी बुक्स. सो वी हैव रिटन इट लाइब्रेरी बुक्स फंड, एंड ये पैसा डोनेशन से यहाँ पे हम लेकर आए 62,500. Now the next item is connected to sale of old furniture. Now sale, purchase, everything is linked together.
तो आई विल सॉल्व दैट सेपरेटली. ओके, सेपरेटली मतलब ड्यूरिंग द पॉइंट नंबर 3 एंड द पॉइंट नंबर 4. अभी के लिए वो जो 20,000 है उसका मैं पोस्टिंग करने वाला हूँ. पॉइंट नंबर 1, ट्यूशन फी yet to be received. 25,000 is receivable from some students. 5-10 बच्चे, तो वो जैसे हमेशा रिसीवेबल ऐड होता है, आज भी ऐड होगा. सब्सक्रिप्शन के जगह पे ट्यूशन फीस में ऐड हो जाएगा. सो अबाउ 25,000, simple, nothing complicated. And anything receivable is an asset. Anything payable becomes a liability. So on the asset side, here goes the very last item. For the current year, obviously 16-17, 25,000. Just like tuition fees is receivable, salary is payable. Okay, maybe to teachers, maybe to the office staff. How much? 30,000 salaries is payable. Salary में लिख लेते हैं payable और outstanding, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है. Similarly, receivable के जगह पे भी outstanding आ सकता है. 30,000, 5,30,000. Next, well, the second effect, the above, that also is for the current year, 30,000. Okay, then comes the very important explanation of furniture, but not point number 3, point number 4. ऐसा क्यों है? Because point number 4 में दिया है the value, I repeat here, the book value of the furniture sold was 50,000 on 1st April 2016 and it was sold for 20,000. Okay, so just a minute, let me explain this little bit more detail में. When I go to furniture, which is here, पहले क्या करना है इसमें? पहले आपको सेल ऑफ फर्नीचर माइनस करना है, तो वो कर दिया. बुक वैल्यू माइनस करना है. एंड हाउ मच वाज द बुक वैल्यू? 50,000. ओके, सो हियर बुक वैल्यू माइनस किया तो बचेगा कितना? 50,000. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि दिस 50,000 ओके इज आफ्टर द सेल. बट ये जो 50,000 है इसके अंदर दो चीजें आ चुकी है. कौन सी दो चीजें आ चुकी है? दो फर्नीचर. 1 lakh furniture was given to you in the trial balance which was on 31st March 2017. उस 1 lakh के अंदर जो 1st October 16 को आपने न्यू फर्नीचर खरीदा 40,000 के लिए, that also is a part, वो अलग नहीं है. It's already a part of the furniture in 1 lakh. So in 1 lakh, please कृपया ध्यान दें, आपके पास ओल्ड फर्नीचर है, न्यू फर्नीचर. ओल्ड फर्नीचर में 50,000 आपने बेच लिया. So 50,000 जो रिमेनिंग है, it has two furnitures, which is what I am specifying. So I hope you can see that here. तो remaining old furniture plus new furniture. Remaining is important. It is 10,000 जो beginning से आपके साथ है, and the new one is 40,000 जो not beginning से but 1st October से आपके साथ है. Because many students will be a bit confused. So purchase तो हमको add करना है नहीं. Trial balance means the closing balance of furniture. तो उसके अंदर already the new furniture has been added. The only thing we have done is we have removed the old furniture, the part of the old furniture, not the entire old furniture, the part of the old furniture sold, and the remaining 50 that you see on the screen above, that has two. It has the new and the remaining old. Now, why is this so important? Because it somehow, not somehow, in fact, it directly affects the depreciation calculation. Hold on, before I do that, अगर हमने 50,000 का फर्नीचर 20,000 में बेचा तो पहले तो थोड़ा बैड लक है क्योंकि लॉस हुआ आपको. तो पहले लॉस लिख देते हैं, which is right above.
So the cost price was 50,000, selling price was 20,000, 30,000 का loss. ये तो हो गया profit and loss on sale of furniture. Right now, if I look at the question which I have to, because I have to show you point number 4 is covered up sale. Point number 3 purchase already is a part. Add भी करना अलग से. Already is a part of 50,000 because 1 lakh was on 31st March 17, which is the little bit confusion का मुद्दा for some students because ये trial balance है, इसका concept अलग है. Okay? हाँ, तो अब मैंने 1 2 3 4 कर लिया, हो चुका है. तो point number 5 पे आऊंगा, which is depreciation on furniture. But there is no one furniture. There are two furnitures. 10% दोनों पे करना है. इसके लिए so that there is no confusion. Very simply, above me is a working note. तो आप लोग वो पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. It says furniture of 50,000 after sale, sale के बाद consist of old furniture 10,000 and 40,000 new furniture. क्योंकि 1 लाख में से आपने 50,000 का सेल निकाल दिया, तो 50,000 जो बचा है has two furnitures. तो what do you have to do? You have to do depreciation अलग अलग, separately. Okay, तो old furniture पे मैं 12 महीने के लिए करूंगा. 8 फॉर्मूला A into R into T. New furniture पे again A into R into T, but the T time is for 6 months. So if you would please look above. Old furniture 10,000 remaining जो assume हमने किया है कि from the beginning till the end था. 10% 12 months 1,000. New furniture 40,000. 10% 6 months 2,000. आपको अलग अलग depreciation नहीं लिखना, जोड़ के लिखना है. ऐड कर लेते हैं. So the addition gives you and me 3,000. So I repeat myself, this is the explanation of the depreciation on furniture. The balance on furniture, which is 1 lakh, no, and then the remainder of 50,000. That is a little bit of a confusion for some students. Hopefully you have understood that. अभी लिखना कहाँ पर है, which is पुरानी कहानी, वो तो आपको depreciation minus करना पड़ेगा. Outer column में 47,000. That is how you get 47,000. And the second effect. Okay. Yeah. Just to highlight the main part of furniture for you. And here goes. Depreciation on furniture. Again, it is both. Just to highlight the main part for you. Remaining, I'll go back to the question. Okay. 15% on library books. Let's do that क्योंकि इसमें कोई ट्रिक बाजी नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 1,50,000 का 15%, 22,500, 1,27,500, and the second effect of this depreciation is on the debit side. There goes 22,500. And just behind me 5%. if you're wondering on what, मैं भी सोच रहा था क्योंकि मेरे पीछे था building. So let's go to building. That is ऊपर है, उसका 5% आपको डिप्रिशिएट करना है. 31,250, 5,93,750, 31,250 का सेकेंड इफेक्ट. There goes 31,250. If you thought चलो खत्म हो गया, नहीं जी, एक हिडन एडजस्टमेंट है. किसका? वो इन्वेस्टमेंट आपको दिखता है ऊपर. ओके, सो जस्ट टू क्विकली पॉइंट आउट. हाँ जी, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट पे आपको 12% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए. इन द होल क्वेश्चन इंटरेस्ट दिया ही नहीं है. दैट डजंट मीन सर बोला ही नहीं उन्होंने, नहीं, वो हिडन एडजस्टमेंट है. If you have done an investment, assuming it is for the full year, you deserve interest. So, how much is the interest? Let me show it to you. So, we assume that the investment is for the full year because otherwise they have not specified any date. So, using the ART formula, we have to calculate. So, 5 lakh, 12%, 12 months, 60,000.
ओके, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड टेल द कंपनी जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, साडा हक एथे रख, तो मतलब उनको देना पड़ेगा, आपको थोड़ा डिले कर लेंगे बट देना पड़ेगा. आई जस्ट हर्ड द न्यूज़ के the Indian cricket team, the women's Indian cricket team, last year May they had entered the finals of the World Cup, and this month, that is around 1.5 year के बाद, they are going to get their part of earnings. So you can understand कि बाबा जो मेहनत उन्होंने की थी वो 1.5 year बैक था, पैसे फल अभी मिलने वाले, वो किधर जाएगा नहीं, थोड़ा डिले हो जाएगा पेपर वर्क के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर, बट मिल जाएगा. सो इट इज रिसीवेबल, तो उन्होंने भी लिख के रखा रहेगा मैच अर्निंग्स रिसीवेबल, सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीवेबल. सो हियर गोस, इन्वेस्टमेंट किया है, अगर बीज बोया है तो फल जरूर मिलेगा, फल की उम्मीद हमेशा करना. कभी डिले हो जाता है बट कभी थोड़ा ज़्यादा टेस्टी फल थोड़ा लेट में आता है, बट आता ज़रूर है. 60,000. So outer column is 5,60,000 and second effect, हर चीज का अकाउंट्स में हर चीज जोड़ी में होती है, इंडिविजुअल नहीं होता, हमेशा जोड़ी में होता है. इनकम above me 60,000 and with this hidden adjustment we can start to total. So we are back to a question जहाँ पे income is more 9,87,500 and surplus is your answer 2,97,750. So income ज़्यादा है, expense कम है. Our last question had something extremely different, but not this one. This is back to normal. This 297,750 will be added as surplus. That's exactly what is happening right above. I'll do my best to point it out and then add कर लेंगे, total बाहर आ जाएगा जी, and then the grand total नीचे आ जाएगा 14,05,250 and just besides my clean head. And then कोई बात नहीं है जी, ये this brings this particular question to an end. Let me change the scene. So very quickly, the last reminder, what is that? The PDF of this question and answer will be available in the description below, as well as on the Telegram channel. When the entire chapter comes to an end, it will be shared. You can download it from there. And also, if you have not subscribed, a quick reminder, please subscribe the channel. The numbers, when they increase, automatically the YouTube algorithm pushes these lectures to more and more people, and if there are students in that, it will be useful to them. आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ये लेक्चर्स को प्लीज़ शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में. अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर लेना, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स उसको कमेंट बॉक्स में लिख लेना. वी डू आवर बेस्ट टू at the earliest answer that particular doubt. अगर वो काफ़ी complicated होगा आपका doubt, जो possible है, तो we'll try to incorporate it in the upcoming lectures. Okay, till that time, this is Steven sir. This is a goodbye from me. अपना ख्याल रखना. Take care of your seniors and juniors. Take care of your lovely family members. Good day to all of you. God bless.